Hello, am I audible? Yes, sir. Good afternoon, sir. ओके अभी स्टूडेंट तो काफी कम है. व्हाइट बोर्ड विजिबल है. Yes, sir. तो टुडे विल डिस्कस थ्रेशोल्ड लॉजिक. एक हमने वो ग्रुप में शेयर किए थे पीडीएफ फाइल, उसको आप देख सकते हैं. हाँ, एक्चुअली थ्रेशोल्ड लॉजिक it can be you can implement Boolean functions using threshold elements. For example, suppose you have one function. Suppose we have let us see three variable function है xy plus xyz xy z xy bar plus xyz plus suppose we have something x bar yz x bar yz bar. You see that if we wish to implement it using conventional gates, AND gate or gate, है ना? So of course you can simplify it, but to implement this we need one AND gate. For this we need one AND gate. For this we need one AND gate, and then we have to perform all operation. So using 3 AND gates and 1 OR gate, we can implement it. But if we use threshold element can be actually threshold. Using one single threshold element, you can implement a class of functions, a class of Boolean functions. Okay, the class of Boolean functions which can be used, which can be implemented using single threshold element. That class is those functions are known as a threshold function. Let me repeat. Threshold function means these functions can be used. These functions can be implemented using single threshold element. Single threshold element. We'll discuss what is threshold element and what is this. So threshold function, these functions can be implemented using single threshold elements. Single threshold element. So as a result, what happens? Your implementation will be compact, and the cost of realization, it will be cost effective, and the interconnections in the circuit, they will be simpler. So these are the advantages of threshold elements. Using threshold elements, you can realize the circuit in more compact form, and the cost of realization will be less, because the same function, if you implement using conventional gates, you have to use
a number of logic gates, but here it is possible to realize it using single threshold element. So these are the merits of threshold logic, but there are certain drawbacks also. The drawbacks are that all functions cannot be implemented using single threshold element. That means all Boolean functions are not threshold functions. Only a class of Boolean functions can be realized using single threshold element. So, of course, if you use multiple number of more than one threshold element, then using it is possible to realize all switching functions using a number of threshold elements. Okay. But if the function is threshold function, then the cost of realization compact of circuit will be compact and interconnections will be less. So these are the advantages. Drawback is that all functions are not threshold functions. That means all Boolean functions cannot be realized using single threshold element. And another drawback is that the realization, it may not be always straightforward. There are some methods how to identify whether a Boolean function is threshold function or not. So we will study those things. All functions are not Boolean threshold functions. So how to identify, how to know whether these functions can be, a given function can be realized using single threshold element or not. So the effective analysis and synthesis procedure, it is a little bit complex as compared to the realized analysis and synthesis of circuits using conventional logic gates. So major drawbacks is that these two, all functions are not threshold functions. So it is that is the number one, and number two, that means all functions cannot be realized using single threshold element. Number two is that synthesis, analysis and synthesis of threshold functions, the circuits using threshold implemented using threshold elements, they are little bit complex as compared to conventional gates. Okay, now we will see what is threshold element. Am I audible? हेलो yes sir audible. आप लोग ऐसे ही ऑन करके चलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, तो सुन लीजिए। और वो जो हमने पीडीएफ फाइल दिया तो उसको देखिए, शुरू में जो इंट्रोडक्शन वगैरह में लिखा है यही सब चीजें लिखा हुआ है जो अभी बताया, ठीक है, उसको और हम बताते हैं। ओके, next we will see what is threshold element. Threshold element. The threshold element is shown like this. This is one diagram for threshold element. T stands for threshold. T is threshold, and it has multiple inputs. Suppose x1, x2, x3 up to xn, n inputs. This is suppose x1, x2, and in this way we have up to xn. So these are the inputs, and with each input we have weights. One weight is associated with each input. W1 is weight corresponding to the input x1, W2 is the weight corresponding to the input x2, and Wn is the weight corresponding to xn, and it is single output A. So
here x1 x2 up to xn है ना, these are the inputs x1 x2 xn. So these are the inputs. It has n inputs, and f is the output, single output. F is output. Now these inputs and output, they are binary variables, so they can assume only two values, 0 or 1. Okay. So x1 x2 up to xn, these are the binary inputs, and f is binary output. And this w1 w2 up to wn, they are weights. And T is threshold. Now these weights and threshold, they can be any real number, any real finite, any finite real number. Okay, so they are any finite real number. They can be positive or negative, fraction, and any finite real number. So they are not binary. W1, W2, W3 up to Wn, these weights associated with the inputs and threshold, they are actually any finite real number. Okay, they may be fraction, they may be integer, they may be positive or negative, है ना? So any finite real number. But x1, these inputs and output, they are binary in nature, 0 or 1. Now in this weighted threshold element, what happens, how it works? Here the output will be 1 if and only if the weighted sum means w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3 up to wn xn. That means if we write it in summation form, it is like this: wi xi, where I runs from 1 to n. Okay, so if this weighted sum is greater than or equal to threshold value, then output will be 1. Okay, is it clear? And otherwise output, that means if the weighted sum is less than t threshold value, then output will be 0. So f is 0 otherwise, or you can write it if and only if the weighted sum, मैं लिख रहा हूं इधर, wi xi, I runs from 1 to n, just उसका यहाँ पे लेस देन टी लिख दीजिए, ठीक है? और ये जो हमने लिखा है, ये जो साम लेफ्ट हैंड साइड में जो साम है, इसको हम लोग बोलेंगे वेटेड साम. ये जो टर्म, दिस टर्म इज वेटेड साम, है ना? So if weighted sum is greater than or equal to threshold value, then output will be 1. Otherwise, output will be 0. So this is a threshold element. Is it clear? Any question? Hello. No, sir. Now, here you see this element, one threshold element can be uniquely defined by weight threshold vector. मैं लिख रहा हूँ रेड में, weight threshold, इसको आप लोग चाहे तो नीचे लिखिए, weight threshold vector.
weight threshold vector क्या है? V is the vector. Okay, this is see that if we know this weights W1, W2 up to 10 और यहाँ पे सेमीकोलन दे करके लिखे T, है ना? So any threshold element can be uniquely characterized by this weight threshold vector. क्योंकि बाकी तो ठीक है, एक चीज ये लिख लीजिए वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर। तो ये जो टर्म को थोड़ा फेमिलियर हुई है, पहले तो थ्रेशोल्ड एलिमेंट क्या है? ये जो अभी डायग्राम में हमने दिखाया ये चीज है ना। एंड इसका जो आउटपुट कब 1 होता है कब 0 होता है। वेटेड सम हम इसको कहेंगे सम ऑफ, मतलब W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 अप टू WNxn, इसको वेटेड सम कहते हैं। व्हाट इज वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर? वेट्स को पहले लिखिए, फिर कोलन सेमीकोलन के बाद टी लिखिए। दिस इज द वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर, दिस इज द ओके V। और थ्रेशोल्ड फंक्शन क्या है? थ्रेशोल्ड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग सिंगल थ्रेशोल्ड एलिमेंट। ठीक है, अच्छा अब सब मैथमेटिक्स में देखिए को सॉरी चलिए इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। ओके सो तो वेटेड सम क्या है? W1x1 प्लस W2x2 up to WNxn. So we have seen that in case of threshold element, if this weighted sum is greater than or equal to T, then what happens? The function will assume 1 value. And if it is less than T, then the function will assume 0 value. Now let us see what happens if this is equal to T. ये किसका इक्वेशन है? Here x1, x2, xn they can assume binary value, and w1, w2, w3 they can assume any value, any real finite real number. T is also any finite real number. So this is equation of, बताइए ये किसका इक्वेशन है? हेलो, am I audible? Yes, sir, you're audible. हाँ तो बता सकते हैं किसका इक्वेशन है? अच्छा चलिए आप ये बताइए कि W1x1 प्लस W2x2 इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन है ना। W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3, ये किसका इक्वेशन है? इक्वल टू T, ये 2 डायमेंशनल प्लेन का इक्वेशन है ना।
So similarly, this will be actually n minus one dimensional hyperplane. N minus one dimensional hyperplane. Okay. So you see that the function will be one on this hyperplane or above this hyperplane, greater than equal to t, है ना? Or if the weighted sum is less than t, then the function will assume zero value. So what does it mean? It means that the function will assume one value on the hyperplane, और मतलब जिस साइड में ट्रू वैल्यू एस्यूम कर रहा है उसको ऑपोजिट साइड में the function will assume zero value. ठीक है ना? So the function will assume true value, that is one. The function will assume one, है ना? प्लेन में और प्लेन के एक साइड में करेगा, और जिस साइड में वन एस्यूम कर रहा है फंक्शनल वैल्यू वन है ना, उसको ऑपोजिट साइड में फंक्शन विल बी जीरो. That means this hyperplane is separating that true values from the false values. ठीक है? And this property will discuss later also, that this property is known as linear separability. इसको फिर डिस्कस करेंगे हम, थोड़ा जस्ट बता दिए इसके साथ. Now let us see how we can realize a function using threshold function. Realize a function using threshold element. ठीक है? Suppose we have a function f of x1, three variable function x2, x3 in sum of product form. So 0, 1, 3. ठीक है? Now we want to realize this function using threshold element. So it has three inputs. So threshold element should look like this. It is three inputs. So here we have three inputs. X1, X2, X3, and three weights W1, W2, W3. Okay. So suppose you want to realize this function using this element. So what you have to do? We have to find the values of, we have to determine the weight threshold vector. That is W1, W2, W3 और a t, है ना? इसका वैल्यू हमको चाहिए, so that this element realizes the given function, है ना? So how to proceed?
तो इसको आप एक ट्रूथ टेबल बना सकते हैं इसी, है ना। मैं बहुत अच्छा ड्रा नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए x1 x2 x3 ये इनपुट्स को यहाँ पे लिखिए एंड आउटपुट, ठीक है। तो थोड़ा एक मिनट, चलिए पहले से थोड़ा बेटर होगा। तो देखिए 0 0 0, इसमें फंक्शनल वैल्यू क्या है 1। फॉर 0 0 1 यहाँ पर भी 1 है। फॉर 0 1 0 इसके लिए 0 है। फिर 0 1 1 मतलब 3, तो ये 1 है। बाकी 4 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1, ऐसा लिख लीजिए हमको यहाँ पे, ये सब के लिए 0 है, ठीक है। दिस इज द फंक्शन। तो लास्ट वाला कॉलम लिख लीजिए अपने आप। तो जब फंक्शन वैल्यू 1 है 1, इसमें क्या है कि वेटेड सम क्या है W1 X1, है ना। तो W1 X1 क्या होगा 0 इंटू, मतलब W1 इंटू X1 क्या है 0 इंटू 0, प्लस W2 X2 W2 इंटू 0, W3 X3 W3 into 0. So weighted sum must be greater than or equal to threshold value. Then only the function will assume one value. So this is one inequality. ठीक है, क्लियर है। क्योंकि फंक्शन का वैल्यू 1 है, इट मीन्स दैट वेटेड सम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू t। अभी अभी जो हम लोगों ने देखा कि दिस आउटपुट विल बी 1 इफ द वेटेड सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब सेकंड रो में देखिए, सेकंड रो, तो इसमें क्या है W1 इंटू 0 प्लस W2 इंटू x2 दैट इज 0 प्लस W3 इंटू x3, x3 is 1 in this case, so this is also be greater than equal to t। थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, इट मीन्स वेटेड सम शुड बी लेस देन t, लेस देन थ्रेशोल्ड, that means W1 into x1 that is 0, W2 into x2, x2 is 1, plus W3 into 0. This should be less than t because the function assumes 0 value here. So in this way, you have to write all the inequalities. ठीक है, एक और लिख देते हैं, बाकी आप लोग लिखिएगा। W1 into 0 plus W2 into x2 that is 1 plus W3 into x3 that is 1 and functional value is 1, so this is greater than 1 है तो greater than equal to 0, 0 है तो less than equal to 1 है तो greater than equal to t, 0 है तो less than t। So in this way, for this example, you have to solve 8 inequalities because your truth table of this function consists of 8 entries. For each entry, for each row, you will get one inequality. Now, so we have 8 inequalities in this case, and this 8 inequalities, you have to solve these 8 inequalities. And if you get a solution, है ना, तो इस solution आपको, if there exist W1, W2, W3 and T satisfying all the inequalities, so that is one weight threshold vector. So you can determine weight threshold vector in this way. But it may happen that there is no solution. It may happen that some inequalities are satisfied, all the there is no solution. There is no values of W1, W2, W3 and T are found which satisfies all the inequalities. That is infeasible solution. If there is no feasible solution of these inequalities, then
we'll say the function is not threshold function. That means it cannot be realized using single threshold element. So if you get one feasible solution, then the function is threshold function, otherwise function is not threshold function. So this is the basic method for realizing with threshold function. Simply you construct the truth table, write the inequalities, and by solving those inequalities, you can determine whether the function is threshold function or not. If there is solution, तो threshold function है, and no solution, threshold function नहीं है. And if it is threshold function, so you may get maybe that infinite solutions are possible, but you can choose only one set, and that will give you the weight threshold vector for the function. ठीक है? So in case of n variable function, we have considered 3 variable function in general. Suppose if you have n variable function, that means the function of x1, x2, x3 up to xn. So in that case, by solving, कितना inequality solve करना, इसका truth table में कितना entry होगा? 2 to the power n. So by solving 2 to the power n inequalities, you can conclude whether the function is threshold function or not. Inequalities. You have to solve 2 to the power n inequalities for n variable functions. And so this is the straightforward method. But if n is large, so number of inequalities will be more. So in that case, we will discuss that how to find out whether a function is threshold function or not by solving less number of inequalities. It is always possible to determine whether the given function is threshold function or not by solving 2 to the power n inequalities, है ना? तो straightforward definition से ये आता है. लेकिन यहाँ पे actually क्या है कि we will show later that in fact you need not solve 2 to the power n inequalities. इससे कम inequality solve करके भी आप determine कर सकते हैं कि function threshold function है कि नहीं. तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो हाउ टू रियलाइज थ्रेशोल्ड फंक्शंस, उसमें हम लोग देखेंगे कि और इस मेथड इफेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज, है ना? तो ये हम लोग बाद में इसको भी देखेंगे. तो अभी मतलब मेथड ये है कि इस तरह से टेबल से ट्रूथ टेबल बना करके for each row you write the inequality and solve all the inequalities. अगर solution है तो threshold है, solution नहीं तो threshold function नहीं. हाँ बताइए, अभी तक कुछ क्वेश्चन, एनी डाउट? Am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है. हेलो सर, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू सर दी रहेगी क्या क्वेश्चन में? हाँ सर थ्रेशोल्ड वैल्यू सर कोई वैल्यू होगी सर ऐसी प्रॉपर, या फिर नहीं सर वो दी रहेगी? नहीं वो निकालना पड़ेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. थ्रेशोल्ड वेट है तो थ्रेशोल्ड दिया नहीं रहेगा आपको. इसमें जो एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे थे, इसमें Q2 W T सबका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा. एट इनइक्वालिटीज, है ना? अच्छा सर, या नहीं रहेगा वो सर, आपको बताइए. सर इसमें जैसे सर 8 इक्वेशन है सर, जैसे 4 इक्वेशन को सॉल्व करके सर 4 वेरिएबल निकल आएंगे, तो सर उन वेरिएबल्स को अदर इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना इसमें?
हाँ, आपका जो भी अच्छा, सेट ऑफ W1 W2 होगा वो सारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन थ्रेशोल्ड है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फंक्शन इज नॉट थ्रेशोल्ड फंक्शन। ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, जो हमने शेयर किए थे ना वो जो पीडीएफ फाइल, उसको थोड़ा निकाल लीजिए, मैं स्क्रीन में शेयर कर दूं, यहाँ सबको पता लगे कि आप लोग पढ़े हैं। एक्चुअली जी कोहावी का किताब जो है उसका चैप्टर 7 है, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सब फ्रीली मिल जाता है शायद। इसका किताब का नाम भी हमने शेयर किए थे। इसका इंट्रोडक्टरी ये पढ़ लीजिए। देखिए, अब मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। ये जो यहाँ पे देखिए, पहले ये जो सर्किट कंस्ट्रक्टेड ऑफ, आप लोग को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देता, आप लोग के पास जो फाइल है उसको देखिए, सेकंड पैराग्राफ, मेन बातें क्या है हम बताएं कि सर्किट्स constructed of threshold elements usually consist of fewer components and simpler interconnections than corresponding circuit is implemented with conventional gates। जो हम बताए है ना, इसमें आपको नंबर ऑफ गेट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम लगेगा, थ्रेशोल्ड एलिमेंट्स कम लग सकता है ना, और कम लगे तो इंटरकनेक्शन कम होगा और सर्किट कॉम्पैक्ट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस। और ड्रॉबैक्स क्या है? वही lack of effective synthesis procedure, और all functions are not realizable by single threshold functions, है ना। सो ये एक्चुअली है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसको समझ में आ जाएगा। तो मेनली ये यूजफुलनेस, देखिए इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट इसमें लिखा हुआ है कि द यूजफुलनेस ऑफ थ्रेशोल्ड लॉजिक और एनी, मतलब वो तो है अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, कैपेबिलिटीज एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, एज वेल एज बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव सिंथेसिस प्रोसीजर। तो यहाँ पे इस चैप्टर का यही है कि कैसे इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, एनालिसिस एंड सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर है। थ्रेशोल्ड एलिमेंट देखिए, जो डायग्राम ये हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ये सिंबल फॉर थ्रेशोल्ड एलिमेंट, ये जो डायग्राम है फिगर 7.1, इसको देखिए। यहाँ पे हुई x1 x2 xn, these are the inputs, w1 w2 wn, they are the weights, t is the threshold, y is the output। हमने शायद f लिख रहे थे। यहाँ पे क्या x1 x2 xn, they are the binary in nature, they can assume 0, 2 values 0 or 1, output is also binary, w1 w2 w3 they may be any, देखिए यहाँ पे लिखा है any real finite positive और नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बस सही है। और इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप यहाँ पे देखिए, इक्वेशन नंबर 7.1 को देखिए। आउटपुट पे विल आउटपुट y is 1 if and only if the weighted sum is greater than equal to threshold value t। और सेकंड में देखिए लिखा है कि वेट इफ आउटपुट विल बी 0 इफ एंड ओनली वेटेड सम इज लेस देन t। और यहाँ पर लिखा है देखिए, द सम, ये जो सम है इसको वेटेड सम ऑफ द एलिमेंट कहते हैं, वेटेड सम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और ये हम लोगों ने हाँ, यहाँ पे एक्चुअली जैसे मान लीजिए कि एलिमेंट दिया हुआ है, ये जो फिगर 7.2 में देखिए, यहाँ पे वैल्यूज और ये दिया हुआ है, आपको इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप निकालना है ना। ये वाला शायद हमने नहीं बोला है, बट ये और भी इजी है। तो इसमें क्या करना है, मान लीजिए कि इनपुट 0 0 0 आप अप्लाई करिए, 0 0 0, वेटेड सम क्या होगा, वेटेड सम 0 हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, नो, है ना, 0 इज लेस देन हाफ, तो 0 0 0 के लिए आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए टेबल में लिखा है 0 0 0। इसका यही है कि इनपुट अप्लाई करिए, ऑल पॉसिबल इनपुट्स, 8 इनपुट्स आर पॉसिबल, 0 0 0 0 0 1 अप टू 1 1 1, ठीक है। एंड weighted sum क्या है, w1 x1 that is -1 into x1, 2 into x2 plus 1 into x3। तो weighted sum को आप कंप्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब weighted threshold value is half, if weighted sum is greater than or equal to half तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो इस तरह से इसमें फंक्शन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है ना, ये इसको भी देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद नीचे वो अभी हम इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ रहे हैं, इसके बाद आप आ जाइए इधर।
अच्छा, इसका भी हम बाद में बताते हैं, पहले देख लीजिए। ये देखिए, ये जो एग्जांपल है इसको अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, किताब से ही है, कि एक फंक्शन दिया गया है आपको, वो वेट्स निकालना है, तो जो बताए कि अपने इसे ट्रुथ टेबल बना लीजिए, है ना, और इस तरह से इनइक्वालिटीज को लिखिए, और इस इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इसमें सॉल्यूशन शायद निकल रहा है। ये देखिए सॉल्यूशन निकाल, एक है W1 इक्वल टू 2, W2 t इक्वल टू माइनस हाफ, W3 1। इस वैल्यू के लिए ऑल इनइक्वालिटीज विल बी सेटिस्फाइड, सो दिस फंक्शन इज थ्रेशोल्ड फंक्शन। ठीक, तो अभी तक हम लोग ये डिस्कस किए। ठीक है, तो ये जो PDF फाइल दिए थे उसको थोड़ा ये करिएगा, देखिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब कैपेबिलिटीज लिमिटेशंस पे आते हैं थोड़ा। Suppose we have a function like this, f of f equal to, suppose like this, x1 x2 plus x3 x4, 4 वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग ये बताना है कि ये फंक्शन थ्रेशोल्ड फंक्शन है कि नहीं। We have to determine whether this function is threshold function or not। तो वो जो तरीका बता रहे थे कि अब ट्रुथ टेबल x1 x2 x3 x4, ठीक है, एफ एक्चुअली पता नहीं हमारा ये बेंट हो रहा है। अच्छा, इसमें तो आप 2 to the power 4 दैट इज 16 इनइक्वालिटी आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम 16 का नहीं, आप देखिए थोड़ा जैसे हम कुछ सिलेक्टेड एंट्रीज हम ले रहे हैं, जैसे 1100, इसमें फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि x1 इज 1 x2 इज 1 x3 इज 0, तो इसका फंक्शन का वैल्यू 1 होना चाहिए। और अगर हम ऐसे ले ले 0 0 1 1, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 हो जाना चाहिए, है ना। और एक एंट्री मान लीजिए ऐसे लेते हैं 0 1 0 1, इसको पुट करिए 0 1 0 1, इसमें फंक्शन का वैल्यू 0 है। और एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 1 0 1, बाई इंस्पेक्शन ले रहा हूँ, ये क्या है कि 0। ठीक है, अब देखिए और भी एंट्रीज आपका उसमें है,
बट इस चारों में से आप देखिए निकल सकते हैं whether this function is threshold function or not. तो यहाँ पर we have 4 इनपुट्स, तो थ्रेशोल्ड एलिमेंट कैसे होगा इसी, ये 4 इनपुट आप दिखाइए, x1, x2, x3 एंड x4. x1, x2, x3, x4. And weight associated with x1 is w1, w2, w3, w4. And this is output f. तो ये जो पहला वाला है इसका वेटेड सम क्या होगा, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस w4 x4. तो ये करेंगे तो क्या आएगा, w1 प्लस w2 है ना, बाकी दोनों 0 है क्योंकि x3 x4 0 है और फंक्शन का वैल्यू 1 है. सो वेटेड सम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू t. ये हो गया फर्स्ट रो का इनइक्वालिटी है ना, वेटेड सम should be greater than equal to t because f equal to 1. Similar way सेकंड में से क्या आएगा आपका, w3 प्लस w4 should be greater than equal to t. थर्ड वाले में क्या आएगा, w2 प्लस w4 should be less than t क्योंकि फंक्शनल वैल्यू 0 है. और फोर्थ लास्ट इसमें क्या है, w1 प्लस w3 should be less than t. ठीक है. अब देखिए ये दोनों का अगर आप ऐड कर दें दोनों इनइक्वालिटी, ये क्या, फ्रॉम दिस टू इनइक्वालिटी इट इंप्लाइज दैट w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस w4 is greater than equal to twice t. और नीचे का दो, यहां से क्या आ रहा है, w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस w4 इट इज लेस देन twice t. ठीक है. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों इनइक्वालिटी के, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है ना. तो जो पहला दो इनइक्वालिटी से याद है कि w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस w4 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस टी, और नीचे दो से आ रहा है लेस देन ट्वाइस टी, सेम थिंग लेस देन ट्वाइस टी. व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट you will not get any solution, solution does not exist क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, ये दोनों देखिए. सो इन दिस केस नो सॉल्यूशन. It means that the given function is not threshold function. This given function is not threshold function. That means there are no, there does not, no w1, w2, w3 and w4 and t exist satisfying all the inequalities. तो सॉल्यूशन नहीं है, तो थ्रेशोल्ड फंक्शन नहीं है. इसका मतलब क्या है, दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉट रियलाइजेबल बाय यूजिंग सिंगल थ्रेशोल्ड एलिमेंट, है ना. ये एक्चुअली लिमिटेशन हुआ. दिस इज वन लिमिटेशन, दैट ऑल फंक्शंस आर नॉट रियलाइजेबल बाय, ऑल फंक्शंस आर नॉट थ्रेशोल्ड फंक्शन, है ना. ऑफ कोर्स यू कैन रियलाइज इट यूजिंग मल्टीपल नंबर ऑफ थ्रेशोल्ड फंक्शंस, बट इट इज नॉट पॉसिबल to realize it using single threshold, using single threshold element. But if we are allowed to use suppose 3, तो आप एक threshold element use करके इसको implement कर सकते हैं only this part. Then another threshold element में आप x3 x4 implement करिए, फिर another threshold element दोनों को add करिए, इस तरह से किया जा सकता है. But using single threshold element, क्योंकि single में ही आपका इसमें advantage है ना. तो मल्टीपल तो उसमें एन गेट से भी, एन गेट और गेट से भी कर सकते हैं. तो मल्टीपल वो तो नहीं है, हम चाहते हैं कॉम्पैक्ट रिलेशन हो. तो इन दिस केसेस यू मे नॉट गेट एडवांटेज ऑफ थ्रेशोल्ड लॉजिक रिलेशन, है ना. अगर सिंगल थ्रेशोल्ड एलिमेंट में हो जाए तो बहुत ही आपको फायदा है ना, बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा. तो कैपेबिलिटीज लिमिटेशन में यही है कि ऑल फंक्शंस आर नॉट
realizable by single threshold element. ठीक है, आप लोग सुन रहे कि नहीं? Yes, हेलो, sir. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो मैं कितना टाइम हुआ, 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फिर जो है कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट्स प्लीज है। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ओके, 5 बजे से स्टार्ट करते हैं।
हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? आप लोग है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा, अब डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि इस टाइप एक थ्रेशोल्ड एलिमेंट है, सपोज 1 1 1.5, x1 x2 y। तो इसका कैसे एनालाइज करेंगे आप? इसमें ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? x1 x2, ठीक है। अब 0 0 इनपुट दीजिए, वेटेड सम क्या होगा? वेटेड सम 0, और थ्रेशोल्ड वैल्यू t इज 1.5 1.5। तो इसमें वेटेड सम क्या होगा? 0, है ना। तो देखिए 0 0 इज ऑब्वियसली लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू 1.5, तो आउटपुट क्या हो जाना चाहिए? 0। तो यहाँ पे y शुड बी 0, और 0 1, है ना, आउटपुट विल बी 0, और 1 0, output should be 0, or 1 1. In this case, weighted sum is 2, which is greater than the threshold value, 1.5. So in this case, it is 1. So this is the truth table. That means this element is 2 input AND gate. AND gate का truth table है. So this is one AND gate. समझ में आ रहा है? तो एंड 2 इनपुट एंड गेट आप इस तरह से रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि इस तरह से है, एक और इसको देखिए। मान लीजिए कि वेट थ्रेशोल्ड वैल्यू इज हाफ, x1 x2 दो इनपुट है, और कॉरस्पॉन्डिंग वेट से सपोज 1 1, एंड आउटपुट इज y, ठीक है। इसको देखिए, इधर देखिए, ट्रुथ टेबल बनाइए, x1 x2 आउटपुट 0 0। वेटेड सम क्या है? w1 x1 w2 x2, w1 is 1, w2 is 1, and t is half in this case. So weighted sum is 0, so obviously output will be 0. For 0 1, weighted sum is 1, threshold is half, so 1 is greater than half, so output is 1. For 1 0, यहाँ पर भी same thing 1. For 1 1, weighted sum is 2, which is greater than half, so 1. तो ये कौन सा गेट हो गया? OR गेट. So this is OR गेट, है ना। ये इस तरह से आप NAND गेट, NOR गेट रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? Okay. Next, we'll discuss some elementary properties of threshold logic. एक मिनट,
Okay. Next, we'll discuss about properties. Suppose we have one threshold element like this. This is T. This is X1. Then we have X2. Sorry. इसको मैं गलत जगह पे लिख दिया. यहाँ पे लिखिए इनपुट X1, X2, and this is the ith input Xi, and this is the Xn, and weights associated with the inputs are W1, W2. For Xi you have Wi and Wn, and output suppose Y. ठीक है. एक और थ्रेशोल्ड एलिमेंट मान लीजिए इस तरह से है. X1, X2, then we have suppose Xi complement of Xi. ये ध्यान रखिए, ये complement है, complement of Xi. Only Xi input is complemented, other inputs are uncomplemented. और ये W1, W2 और जो complemented है उसका weight मान लीजिए -Wi और ये Wn, and here we have T minus Wi और ये मान लीजिए फंक्शन ए. एक्चुअली ये दोनों थ्रेशोल्ड एलिमेंट दे रियलाइज द सेम फंक्शन. मतलब ये जो W है और F है दे आर सेम. ये आप प्रूव कर सकते हैं वही डेफिनेशन से कि W1 कब होगा. देखिए when W is 1, W is 1, sorry, W नहीं, Y. If Y is 1, then F will also be 1. If Y is 0, then F will also be 0. That means ये जो Y और F है they realize the same function. Both the elements they realize the same function. तो ये आपको दिखाना है कि if W is 1, sorry, Y is 1, then F is also 1. तो देखिए Y कब 1 होगा. Y equal to 1 if and only if weighted sum, that is Wi Xi I equal to 1 to n greater than equal to t. ठीक है. यहाँ पे देखिए इसी को आप एक कर सकते हैं जो I जो कॉम्प्लीमेंट किया गया ना I, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं. अगर राइट हैंड साइड में हम इधर लिखते हैं है ना, T माइनस Wi कर देते हैं और इधर हमारा है -Wi Xi बार प्लस
ऐसा करते हैं और भी ये इसमें एक किया है। ओके, इसमें हम लिख रहे हैं डब्ल्यू जे एक्स जे जे इक्वल टू 1 to n एंड जे नॉट इक्वल टू आई। यही से ये जो इनइक्वलिटी, इसी को इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसको देखिए एक्सपांड करके देखिए, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बेसिकली ये जो माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू आई एक्स आई बार है ना, मैं ऐसा करते हैं। देखिए डब्ल्यू आई को आप ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू आई इक्वल टू डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई प्लस एक्स आई बार। ठीक है, तो हम्म हम्म, तो यहाँ से आपका हाँ, यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो वो टर्म को आप उस तरह से लिखिए, मतलब W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस ये जो WI XI, यहाँ से देखिए WI XI, उसका रिप्लेस कर दीजिए WI माइनस WI XI बार। ठीक है, इसको आप यूज कर लीजिए। सॉरी सॉरी, ये आप XI बार है। ठीक है, इसको यूज कर लीजिए यहाँ पर। ये जो जहाँ पे WXI आएगा, इंस्टेड ऑफ दैट यू राइट WI माइनस, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो WI है वो राइट हैंड साइड में जाकर के T माइनस WI हो जाएगा, और ये जो माइनस WXI बार वो यहाँ बाहर आ जाएगा। और क्योंकि हम ith टर्म को लिख दिए यहाँ पे, जे इज नॉट इक्वल आई यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसको आप एक्सपांड करके करिए, जस्ट W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3, वहां पे जो WXI टर्म है उसको आप लिखिए WI माइनस WI XI बार, बस। तो आपके ये आ जाएगा। अब ये देखिए, ये जो आपका ये जो इनइक्वालिटी, इसका लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली क्या है कि ये जो एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट, इसका वेटेड सम, और राइट हैंड साइड में क्या है वो इसका थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड हो गया, और इसका वेटेड सम है ना। तो बेसिकली you can rewrite this inequality like this, है ना। So whenever y is equal to 1, f will be 1, or similarly whenever y is 0, f is 0. It means that y and f, they are actually same function, ये दोनों फंक्शन सेम है। ठीक है, सो दिस इज प्रॉपर्टी 1। इसको इस तरह से भी फॉर्मली स्टेट करते मैं बताऊं कि if a function is realizable by weight threshold vector, sorry, V1 equal to W1 W2 WI up to WN and T, है ना, then it can also be realized by using the threshold weight threshold vector V2 W1 W2 minus WI up to WN, and threshold should be adjusted, है ना। अगर इससे रियलाइज हो रहा है तो इससे आप रियलाइज कर सकते हैं सेम फंक्शन को। ओनली थिंग इज दैट जो जहां पे माइनस डब्ल्यू है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट दैट इज एक्स आई, दैट शुड बी अप्लाइड इन कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्म। ठीक है, सो इफ यू कॉम्प्लीमेंट ऑन इनपुट वेरिएबल, तो आपको वेट और थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करना है। मतलब जब कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो डब्ल्यू आई थी, यहाँ पे आपको उसको माइनस कर देना है, minus WI, and threshold should be adjusted, threshold will be now T minus WI। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी काफी यूज होता है, इसको याद रखिएगा। इसका प्रूफ भी देख लीजिए, इसका
वो किताब में भी दिया हुआ, हमने बता दिया है, आप लोग तो देखेंगे इजीली समझ जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, है ना। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि सपोज आपका जो वेट्स है, वेट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि यू विश टू रियलाइज द फंक्शन यूजिंग पॉजिटिव वेट्स ओनली, पॉजिटिव वेट्स, क्योंकि एक्चुअली जो वेट्स है ये कैसे रियलाइज करते हैं, बेसिकली रेजिस्टेंस से करते हैं, रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो पॉजिटिव वेट रियलाइज करना, इंप्लीमेंट करना, पॉजिटिव रियलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव वेट्स आर मच इजियर। तो नेगेटिव वेट्स को अवॉइड करते हैं फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इट इज पॉसिबल। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, मैं इसका इलस्ट्रेशन के लिए एक आध एग्जांपल और थोड़ा सा बताते हैं, देखिए। इसको मैं यूज करके आपको एक आध एग्जांपल बताते हैं। Suppose we have, sorry, a threshold element like this, ठीक है। ये मान लीजिए 1 है और ये x1, x2, ठीक है। ये मान लीजिए कि 1.5 है और ये 1 है, -1 मान लीजिए कि ऐसे कुछ है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। मान लीजिए नेगेटिव वेट्स को हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये 1, इसको भी मैं 1 करना चाहता हूँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x1 दीजिए, यहाँ पे उसको पॉजिटिव तो कर दिया, तो हमको क्या करना है, x2 बाद करना है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। और ये जो 1.5 माइनस माइनस मतलब कितना हो गया, 2.5, है ना। ये दोनों फंक्शन सेम होंगे। यहाँ पे जिसको कॉम्प्लीमेंट किया उसको 8 को नेगेटिव करना है और उसको माइनस कर देना, माइनस ऑफ -1, है ना। तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब दे विल रियलाइज द सेम फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नेगेटिव वेट था इसको हमने एलिमिनेट कर दिए इस प्रॉपर्टी से। नाउ इट हैज बीन पॉजिटिव वेट। ओनली थिंग इज दैट क्या इसको हमको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में देना है और वेट को t माइनस WI। तो ये जो था पहले ये था, अब माइनस WI माइनस माइनस मतलब +2.5, ये हो गया, ठीक है। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी व्हाट यू कैन डू, यू कैन कन्वर्ट दिस वेट्स, सारे वेट्स को आप पॉजिटिव वेट्स में कर सकते हैं। नॉर्मली जो इनपुट वेरिएबल्स है दे आर अवेलेबल इन बोथ द फॉर्म्स। तो x2 बाद वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे वेरिएबल्स जितना है वो मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर अवेलेबल इन बोथ द फॉर्म्स, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होते हैं, है ना। तो वो अवेलेबल रहते हैं, और नहीं है तो आपको उसको करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के यूज है। अच्छा, सेकंड एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी तो बहुत है, एक और सेकंड प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इफ ए फंक्शन f is threshold, if f is threshold, if f is threshold function, threshold function, then f bar complement of that is also a threshold function. If f is a threshold function, then f bar is also a threshold function. उसका कॉम्प्लीमेंट भी थ्रेशोल्ड होगा, है ना। और वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर के बारे में भी बताते हैं। तो सपोज द वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू f, लेट अस कॉल इट vf। ये मान लीजिए इस तरह से W1, W2,
W3 मान लीजिए WN, then what will be the weight threshold vector corresponding to F bar? ये क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि if F is 1 then F bar is 0, if F is 0 then F bar is 1, उसको हम यूज करेंगे। तो F1 कब होगा, F is 1 if and only if वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर दिया हुआ है, मतलब वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर में तो वेट ए एक्चुअली इनपुट्स के एसोसिएटेड वेट से और ए थ्रेशोल्ड है। तो इक्वेटेड सम दैट इज WI XI इज, हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन है, हम इसको बताते हैं। I = 1 to n। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि इक्वल को हम अवॉइड कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, वो अभी जो बताया था कि वो जो ट्रू ट्रू वैल्यूज एंड फॉल्स वैल्यूज सेपरेटेड है, तो ऑन द प्लेन उसको भी ट्रू वैल्यू माना जाता है थियोरेटिकली, लेकिन इन प्रैक्टिस वो प्लेन वाले को अवॉइड करते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर प्लेन में है कि समहाउ ड्यू टू द चेंज ऑफ रेजिस्टेंसेस, एजिंग इफेक्ट हो, टेम्परेचर इफेक्ट हो, तो वेरिएशन हो जाए, तो क्या है कि प्लेन का मतलब ट्रू जो वैल्यू है वो फॉल्स वैल्यू में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि ट्रू वैल्यू जो फॉल्स वैल्यू में काफी सेपरेशन रखा जाता है। तो उसका मतलब है कि जो प्लेन है, प्लेन के ऊपर कोई थियोरेटिक प्रैक्टिकली उसके ऊपर रिलेशन का टाइम पे हम लोग ऐसा करते हैं कि प्लेन के ऊपर हम लोग ट्रू वैल्यूज को नहीं रखते, है ना। उसका रीजन ये है क्योंकि थियोरेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका सर्किट यूज करेंगे, आप फिजिकल कंपोनेंट यूज करेंगे वेट को रियलाइज करने के लिए, जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, एजिंग इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट, है ना। तो उसको अवॉइड किया जाता है। तो थियोरेटिकली प्रैक्टिकली हम लोग इसको हमेशा ग्रेटर देन टी ही मानेंगे, इक्वल टू थियोरेटिकल एनालिसिस के लिए इक्वल, अदरवाइज ये टी। तो हम उसको इक्वल को अवॉइड कर रहे हैं इस प्रूफ के लिए, इजी होगा। तो इफ एफ इक्वल टू 1, एफ इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ वेटेड सम इज ग्रेटर देन टी। तो इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड्स, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा -t, है ना। तो हाँ, I = 1 to n। इसका मतलब क्या हुआ, और f = 1 मीन्स f bar = 0। तो देखिए f bar = 0, ये जो पहला जो हम लोगों ने लिखे थे वही इंप्लाई कर रहा है। f = 1 if and only if this, it means that f bar is 0 if and only if this। इसमें हम -1 बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई किए। उसी तरह से if f = 0 if and only if the weighted sum is less than t, अब उस टाइम पे f bar will be 1 if and only if ये जो क्वांटिटी है, this is the weighted sum if it is greater than t। इसका मतलब क्या हुआ, what will be the weight threshold vector corresponding to f bar, इसे बताइए। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, now you got the answer। so it will be simply h is, sorry, okay। देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये होगा -W1, सिंपली आप वेट को और थ्रेशोल्ड को माइनस कर दीजिए, इतना ही फर्क है। चलिए डॉट 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 -WN और -T। So weight threshold vector corresponding to F is, if corresponding to F is this VF, then VF bar will be this। समझ में आ रहा है कुछ? हेलो, यस सर। तो देखिए इस आपका उसमें भी दिखाता हूँ क्या है, एक मिनट।
तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये हो गया देखिए जो कैपेबिलिटीज लिमिटेशंस में ये वाला एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा लास्ट में अगर आप देखें तो एग्जांपल दिया है एक जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो लिखा है सपोज दैट, लास्ट से आप आइए 1 2 3 4th लाइन, सपोज दैट एफ इज दिस इज रियलाइजेबल थ्रेशोल्ड एलिमेंट्स है ना, ये हम लोगों ने देखा कि ये रियलाइजेबल नहीं होता है, ये सो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, ये है इसमें 7.2 इक्वेशन नंबर 7.2 और 7.3 को देखिए, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे कंक्लूजन है कॉन्सिक्वेंटली f इक्वल टू x1 x2 प्लस x3 x4 कैन नॉट बी रियलाइज्ड बाय ए सिंगल थ्रेशोल्ड एलिमेंट, क्योंकि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर ये तो डिस्कस किया था है ना, इसके बाद ये देखिए एलिमिनेटरी प्रॉपर्टीज, इसमें प्रॉपर्टीज में वही जो पहला हम लोगों ने बताए कि ए फंक्शन, अब देखिए जो सेकंड पैराग्राफ का पढ़िए, कंसीडर ए फंक्शन एफ that is realized by a single threshold element v1 equal to a weight threshold vector w1 w2 wj wnt whose inputs are x1 x2 xj xn. Now suppose that one of the inputs, say xj, is complemented, then as we will show the same function f is realizable by a single threshold element है ना, w1 w2 minus wj wn t minus wj, और यहाँ पे xj जो है कॉम्प्लीमेंटेड है। इसका प्रूफ जो ए है देख लीजिएगा, जो हमने बताया वही है ना। इसमें देखिए जो इटैलिक फॉर्म में लिखा है, इफ ए फंक्शन इज रियलाइजेबल बाय ए सिंगल थ्रेशोल्ड एलिमेंट देन इट इज रियलाइजेबल बाय एन एलिमेंट विद ओनली पॉजिटिव वेट्स। अगर आपको बताया जाए इसको प्रूफ करिए तो प्रूफ है ना। ये जो इटैलिक में लिखा गया है इसको देखिएगा, अगर मान लीजिए इससे पूछा जाए सो दैट prove that if a function is realizable by a single threshold element then it is realizable by an element with only positive weights, तो आपको कहानी आपको बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से देखिए ये लिखा है कि we shall next show that if a function is realizable by a single threshold element whose weight threshold vector is this, then its complement is realizable by a single threshold element whose weight threshold vector is this, है ना। और इसमें देखिए प्रूफ जो अभी 7.7 7.8 ये आपका प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ है। फिर ये जो सिंथेसिस वाला, इसके लिए नेक्स्ट कल डिस्कस करते हैं, इस तो थोड़ा टाइम हो ही रहा है। सिंथेसिस कैसे, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड हाउ यू विल रियलाइज आइडेंटिफाई whether the given function is threshold function or not, वो आज भी डिस्कस की है, बट यूजिंग 2 to the power n इनइक्वालिटीज। कल हम बताएंगे कि उससे कम इनइक्वालिटी से कैसे आप कर सकते हैं, है ना। थोड़ा आप लोग पहले से पढ़ लेंगे तो आसानी होगा, आप लोग ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो कल यही वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है, ये हम ये करेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल हम कोशिश करेंगे जो बचा हुआ है खत्म हो, कितना हो पता नहीं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि टाइम भी नहीं है। एटलीस्ट इस एग्जाम्पल तक हमको आना है। आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप लोग पढ़ के आके क्वेश्चन करो तो हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। ये जो एग्जाम्पल लिखे ना, डिटरमिन वेदर ए फंक्शन, यहाँ तक मतलब पेज नंबर मैं बताता हूँ 188 एग्जाम्पल तक एक रीडिंग लगाइए, और इसमें पढ़ेंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, सारी चीज समझ में नहीं आएगा, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है ना। तो एक कल हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि इसमें एक आध तो थ्योरम भी है, थ्योरम का स्टेटमेंट कम से कम पढ़ लीजिए, है ना, समझ लीजिए बोल क्या रहा है। उसको प्रूफ को अभी फास्ट में स्किप कर सकते हैं, बट उसका स्टेटमेंट जरूर देखिए। तो कल हम 7.2 स्टार्ट करेंगे, सिंथेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड नेटवर्क। दिस इज वन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें व्हाट इज यूनिट फंक्शन है हम बताएंगे, है ना, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये बताएंगे, और
how to identify whether a function is a threshold function or not, by using less number of inequalities. और टू द n नहीं, टू द n में तो कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम्पल को देख लेंगे, अच्छा एग्जाम्पल है, तो आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कल टारगेट है, 188 पेज तक हो जाए तो हो जाएगा। ठीक है, और बताइए कोई क्वेश्चन हो? कल कितने बजे क्लास रखें? हेलो सर कल शाम को रखिएगा, कल गेट का एग्जाम है वैसे। हाँ, हेलो सर कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, सर मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम आप क्लास रखें तो शाम को रखिएगा कल, क्योंकि सुबह में गेट का एग्जाम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कल शाम को रखते हैं। कितने बजे रखें? 4 बजे ठीक है, आज का जो टाइम था। सर 4 बजे तो वहां से आने में लग जाएगा, बहुत दूर है सेंटर। ओके, तो बताइए 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे? 6 बजे ठीक रहेगा सर। 6? 6 बजे सर। ओके ओके ओके, 6 ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। Yes, sir.